Okay, good morning student. Today we are discuss about the very interesting topic that is scalar and vectors. Okay, scalar और vector होची कौन देखो फास्ट तमे यूनिट डायमेंशन रे पढिछ फिजिकल क्वांटिटी हैला फिजिकल क्वांटिटी हम दी प्रकार पढिछ गोटे होची डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आ गोटे होची फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैला एटा तमे कोडी पढिछ यूनिट डायमेंशन रे पढिछ ओके आमे सेकंड चैप्टर स्टार्ट करे स्केलर एंड वेक्टर्स आ ओडिया टा होची अदिश राशि स्केलर टा कोन कहंती अदिश राशि वेक्टर टा को सदिश राशि एटा जो अदिश राशि एटा जो सदिश राशि मींस अर्थ होची कोन होची जत्ते फिजिकल क्वांटिटी अछि माने से डिराइव हो कि हमर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से सबु जाक जत्ते फिजिकल क्वांटिटी होची आमे ताको कोन कले अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन we divide into two types हैला तार जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन ता अछि माने ताको नेग्री हम दी भाग विभक्त करले वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अनदर इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ओके देखिना स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कोन डेफिनेशन दियो स्केलर क्वांटिटी बा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ताको जे स्केलर क्वांटिटी q u a n t i e s scalar quantities देखो the physical quantity the physical quantity which have only magnitude but not direction is called scalar quantity. It's called scalar quantity. ओके बुझेला स्केलर क्वांटिटी कोन एग्जांपल नबा जो फिजिकल क्वांटिटी रो कोन अछि ओनली मैग्नीट्यूड अछि डायरेक्शन नहीं बुझि पाइला तो ताको हम कोन कहै स्केलर क्वांटिटी बा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल कोन होछि मास ओके मास ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन मास डेंसिटी वॉल्यूम इलेक्ट्रिक करंट ओके आ अछि मास डेंसिटी वॉल्यूम इलेक्ट्रिक करंट एगुडा सब हम को क्वांटिटी होछि दैट इज स्केलर क्वांटिटी बुझियला जहार कोन अछि ओनली मैग्नीट्यूड अछि डायरेक्शन नहीं ओके देन डिस्कशन करिवा वेक्टर क्वांटिटी कहले कोन वेक्टर क्वांटिटी हेडिंग दियो वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज ओके वेक्टर क्वांटिटीज लिखो द फिजिकल क्वांटिटी which have both direction and magnitude and also obey law of vector addition is called vector quantity.
ओके जो फिजिकल क्वांटिटी रे कोन अछि डायरेक्शन अछि आउ मैग्नीट्यूड अछि आ से फिजिकल क्वांटिटी कहा को ओबे करछि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रे तमे परे पढिबा ए पढा हबो आ गोटे क्लास दीटा क्लास परे वेक्टर एडिशन कोन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हला तेन तुम जानता जो फिजिकल क्वांटिटी रे कोन अछि डायरेक्शन अछि आ मैग्नीट्यूड अछि एंड आल्सो ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी ओके एग्जांपल दबा ओडा होछि वेक्टर क्वांटिटी फर्स्ट होछि कोन फोर्स फोर्स गोटे डायरेक्शन फोर्स दरकार हो केते अमाउंट हला अमाउंट होछि केते अमाउंट फोर्स को डायरेक्शन रे हला वेक्टर क्वांटिटी ना वेक्टर सदाल में कोन थिबो डायरेक्शन रे थिबो आ मैग्नीट्यूड रे थिबो फोर्स मींस को डायरेक्शन रे फोर्स अप्लाई करिवो आउ केते अमाउंट रो बुझिबा त फोर्स डिस्प्लेसमेंट velocity momentum ओके पीछे मार देखा ला तेणु एगुडा सब जाय कोन लाउछ हमर को फोर्स डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी मोमेंटम इटीसी आ अछि हला एगुडा सब जो को क्वांटिटी होछि हमर होछि कोन होछि वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर क्वांटिटी रे कोन रहला डायरेक्शन रहला मैग्नीट्यूड रहला एंड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ से माने कहा को ओबे करथिबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करथिबे दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी ओके बुझियला तो ओके जो स्केलर क्वांटिटी रे ओडे लिखिथिबो इलेक्ट्रिक करंट बुझि पाइलो तो इलेक्ट्रिक करंट को हमें काहे गोटे स्केलर कहिले देखो काहे गोटे स्केलर करछि ना इलेक्ट्रिक करंट रो मैग्नीट्यूड अछि तमे जानिछो इलेक्ट्रिक करंट केते एम्पियर करंट 2 एम्पियर की 3 एम्पियर की 4 एम्पियर करंट रो एटा ऑलरेडी तमे जानिछो ओके इलेक्ट्रिक करंट रो डायरेक्शन कोन तमे 10th रे पढिछो पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डायरेक्शन अछि मैग्नीट्यूड भी अछि सपोज 10 एम्पियर हला सपोज 10 एम्पियर करंट फ्लो होला पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्शन ता होला ना एम्पलीट्यूड डायरेक्शन होला ना मैग्नीट्यूड होला ना त हम इलेक्ट्रिक करंट को गोटे कोन कहबा गोटे वेक्टर क्वांटिटी कहबा किंतु ताको स्केलर कहीं कहा जाउची कारण ए जुगो द इलेक्ट्रिक करंट इज डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इलेक्ट्रिक करंट केबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करिवो नाही बुझि पाइलो तो सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जेहेतु ओबे करूनी सो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी ओके ठीक अछि तापर हेडिंग दियो पोजीशन वेक्टर कहले कोन ओटे कोऑर्डिनेट एक्सिस रे पोजीशन वेक्टर ओके नेक्स्ट हेडिंग दियो पोजीशन वेक्टर position vector position vector the position vector the vector which gives the position of an object the position of an object with reference to origin of a coordinate system is called position vector ओके तो पोजीशन वेक्टर कहले कोन देखो आमे कोन कहले द वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with reference to origin of a coordinate axis suppose मोरे coordinate axis ड्रा करली x y तमे 10th रे पढिछो x आ y एटा मो कोन अछि x एटा कोन अछि y एटा जे केते अछि origin टा अछि 0 एटा अछि origin अछि 0 suppose this point
हैला ए पॉइंट को इंडिकेट करा हो विथ रेफरेंस पॉइंट होची कोन ओरिजिन हैला सपोज p पॉइंट ए पॉइंट को देयर इज अ पोजीशन सपोज दैट इज एटा पार्टिकल अछि p पोजीशन रे अछि तबे आर पोजीशन वेक्टरटा केता हो ना op op टा कोन हो हमर होची कोन होची पोजीशन वेक्टर दैट इज op तीन चिन्ह वेक्टर सदल में गोटे एरो चिन्ह रहबो दैट इज op दिस पोजीशन ए पोजीशन रे p एठोडे पार्टिकल अछि हम सब पोजीशन वेक्टर रेफरेंस कोन ओरिजिन रो नबा दैट इज op इज द पोजीशन वेक्टर सपोज ये गोटे पार्टिकल अछि तबे आर पोजीशन वेक्टरटा केता हो सपोज ये बॉल टे अछि हैला ए पोजीशन के xy तो पोजीशन xy ए जगह रे हमर गोटे कोन अछि गोटे बॉल टे अछि जदि ए जगह रे बॉल टा रहिला तबे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ते पोजीशन वेक्टर के तो op ए रेफरेंस पॉइंट कोन हो और नो दैट इज op ऊपर एंती वेक्टर लिखला बेले सदा पे आरो चिन्ह दिबो op ऊपर टा आरो दबो हैला दैट इज डिनोटेड एज op वेक्टर op ऊपर आरो चिन्ह दिहला माने आरो दिहला माने पढा हो कोन op वेक्टर here op vector is equal to position vector तो op टा कोन है position vector एटा origin देखो टा ओ रेफरेंस origin रो कोऑर्डिनेट एक्सिस टा ड्रा होई छै बुझिला तो ठीक अछि देन डिस्कस करबा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहले कोन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एटा सब तमरो आगु को मैथमेटिक्स जो सॉल्व कला बेले आसीबो पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तमे देखि कहबो जे कोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोटा पोजीशन वेक्टर ओके हेडिंग दियो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर displacement vector the vector which gives displacement of an object that is change in position with respect to time WRT means with respect to time and the direction of motion of that body ओके बुझिला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बुझि पाइले तो सदाल पे वेक्टर सदाल पे हमर कंपोजिशन रे दीटा जिंस वेक्टर मींस गोटे मैग्नीट्यूड थिबो आ गोटे कोन थिबो हमर थिबो डायरेक्शन थिबो सदाल पे वेक्टर सदाल पे दीटा हे के आस्थियो सदाल पे मिक्स हे वेक्टर कहले माने दैट हैव ए डेफिनाइट मैग्नीट्यूड एंड आल्सो ए डेफिनाइट डायरेक्शन बुझि परतो गोटे मैग्नीट्यूड निश्चित थिबो गोटे डायरेक्शन निश्चित थिबो बुझि पाइले दैट इज कॉल्ड एज वेक्टर बुझिला तेनो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो एमिति वेक्टर व्हिच गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट ओटा बॉडीटा केते डिस्प्लेसमेंट करूची सेटा हमर के दला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बट डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम हैला बा चेंज इन पोजीशन तो पोजीशन टा चेंज होची कहा अनुसार टाइम अनुसार दे द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो आउ कोन दबो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी को डायरेक्शन रे बॉडीटा मूव करूची बुझि पाइले तो को डायरेक्शन रे बॉडीटा मूव करूची आ द पोजीशन टा टाइम अनुसार केमति चेंज होची पोजीशन टा टाइम अनुसार केमति चेंज होची आ को डायरेक्शन रे मोशन करूची ताको के दबो पोजीशन वेक्टर देखिबा गोटे कोऑर्डिनेट एक्सिस रे केम दोची सपोज गोटे कोऑर्डिनेट एक्सिस मु ड्रा करली देखो एटा गोटे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा हला सपोज p गोटे पॉइंट एटा q गोटे पॉइंट so this point is p this point is q a position vector केता होबो that is o origin टा उनियो o that is p a point अगर p point that is q point position vector एला position vector एटा position vector that is एटा गोटे point एटा गोटे position q गोटे position p गोटे position ओके
p गोटे पोजीशन आ गोटे q गोटे पोजीशन वेक्टर हला सपोज ए बॉडी मूव्स फ्रॉम p पॉइंट टू q पॉइंट सपोज एटा छ x एटा छ y हला सपोज ए बॉडी मूव्स फ्रॉम p टू q कोड बसछि p टू q ओठी ठीक आसिला हला p टू q आसिला हला ए पॉइंट को आसिला q point. Okay, here body is moves from p to q. So here pq is the displacement vector. op is the co-vector hela position vector. Now oq is equal to position vector hela. Body is moves from p to q. Here the pq is the co-vector hela displacement vector. ठीक अछि. Here op टा कोन हला OP and OQ. OP and OQ. OP and OQ is the position vector. Is the position vector. Okay. PQ vector टा हमको वेक्टर हला बॉडी टा कोड मूव करछि P to Q, that is displacement vector. PQ is the displacement vector. Displacement vector. Okay, displacement vector. Suppose आ गोटे कोऑर्डिनेट एक्सिस रे इंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस मुनेली हला एटा गोटे कोऑर्डिनेट एक्सिस सपोज x आउ y एटा 0 पॉइंट o सपोज ए बॉडी इज मूव्स फ्रॉम p to o to p बॉडी इज मूव्स फ्रॉम कोन o to p कोड मूव करछि ओरिजिन टू p को मूव करछि o to p एटी पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोन होबो op is the displacement vector. देखो बॉडी कोड को मूव करछि ए क्षेत्र रे बॉडी टा कोड मूव करछि ओरिजिन टू p यदि ओरिजिन टू p टा बॉडी यदि मूव करला तेबे तार पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का केते होबो op सपोज बॉडी टा एठी रहिला सपोज एठी गोटे बॉडी अछि डिफरेंस देखो सपोज ए p पॉइंट गोटे बॉडी अछि p पॉइंट रो मास अछि गोटे बॉडी अछि तेबे op टा को वेक्टर हे जिवो पोजीशन वेक्टर बुझि पाइला तो बॉडी यदि मूव कला तेबे गोटे पॉइंट रो गोटे पॉइंट स्ट्रेट पाथ रे यदि मूव करि गला सेटा कोन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सपोज एठी गोटे बॉडी अछि सब ए बॉडी रो पोजीशन वेक्टर टा केते तेबे रेफरेंस ओरिजिन टू दैट दैट इज op बुझि पाइला तो दैट इज पोजीशन वेक्टर सपोज एठी यदि गोटे बॉडी टा रहिछि ता पोजीशन वेक्टर टा केते ओके नेक्स्ट जिवा नेक्स्ट some definition related some definition बड़ा मन रखियो सब कोन कोन सब वेक्टर अछि some definition related to vector algebra. Some definition related to vector algebra. Okay. Some definition related to vector algebra. Okay. Some definition related to vector algebra. Okay. First देखिबा equal vector कोन first दियो equal vector कोन what is equal vector कहले कोन the two vectors are said to be equal. Let the definition करो the two vectors are said to be equal if they have
if they have equal magnitude and same direction, सेमानकर कोन थिबो मैग्नीट्यूड समान थिबो सेमाने एक्ट करथिबे सेम डायरेक्शन सपोज देखो ए गोटे वेक्टर बी गोटे वेक्टर हला ए गोटे वेक्टर बी गोटे वेक्टर सेम डायरेक्शन इक्वल एम्पलीट्यूड सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ए गोटे डायरेक्शन एक्ट करचंती मैग्नीट्यूड कोन अछि सेम अछि बुझि पाइलो तो दिस ए एंड बी होछि कोन होछि इक्वल वेक्टर बुझि पाइलो तो here a and b is the equal लिखि दो a and b जे को वेक्टर होछि इक्वल वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड आउ सेम डायरेक्शन एक्ट करते वेक्टर साधारण नहीं आस्तो कोन मैग्नीट्यूड as well as direction same magnitude and same direction these two vector is called as equal vector बुझि पाइलो तो here a vector and b vector are said to be equal vector हम को वेक्टर देबा इक्वल वेक्टर ओके देन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर सेकंड रास नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर negative of a vector negative of a vector negative of a vector negative of a vector कहले कोन सेकंड रे negative of a vector the negative of a vector the negative of a vector is defined as another vector having equal magnitude and opposite in direction okay dita vector अछि suppose a and b हैला a and b dita vector अछि नेगेटिव वेक्टर माने कोन होछि सपोज a गोटे वेक्टर अछि इक्वल मैग्नीट्यूड थिबो ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव सपोज a वेक्टर एटा जे b वेक्टर दैट इज b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन रे b वेक्टर ता a वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन अछि इक्वल मैग्नीट्यूड बट opposite direction सेति कहला the negative of a vector is defined as another vector having equal magnitude and opposite direction बुझि पाइलो तो इक्वल मैग्नीट्यूड हेतिबो opposite direction हेतिबो that is b is equal to minus a minus टा को पे रहउची opposite direction पाइ b vector is equal to negative of a vector बुझि पाइलो तो that is called as negative of a vector बुझि पाइलो तो यदि opposite direction अछि ना b vector so we can represent it as b vector is equal to minus of a vector तो b vector direction टा a vector opposite that is b vector is equal to negative of a vector बहुत इंपोर्टेंट से मन रखिता इक्वल मैग्नीट्यूड थिबो ऑपोजिट डायरेक्शन थिबो बुझि पाइलो तो b vector is equal to negative of a vector नेगेटिव टा कोथि अछि हमर होछि डायरेक्शन पे ओके थर्ड रस देखिबा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर sorry modulus of a vector modulus of a vector modulus
modulus of a vector. Modulus of a vector कहले कौन? Modulus of a vector. Okay. Modulus of a vector. The modulus of a vector. Modulus of a vector means magnitude of that vector. Magnitude of that vector. That is example होगा. Modulus of a vector means magnitude of that vector. Suppose हम लिखिबा modulus of example लिया modulus of vector a vector रो modulus होगा. That is a vector रो modulus means only magnitude part टा रहबो, direction part टा कटि जिवो. That is a, that is magnitude. Direction part टा उठी गला, magnitude माने only magnitude part टा रहबो, direction part टा कटि गला. बुझि पाइलो त? ये a टा गोटे को क्वांटिटी ला, स्केलर क्वांटिटी. डायरेक्शन पार्ट उठी गला. सपोज मैं लिखली b वेक्टर रो मॉडुलस केता हो, बस b वेक्टर मॉडुलस नहीं जा b. डायरेक्शन पार्ट टा कटि जिवो, ओनली कोन रहबो हमरो मैग्नीट्यूड पार्ट टा रहबो. मींस मैग्नीट्यूड पार्ट माने एटा कोन डायरेक्शन कटि गला, एटा स्केलर क्वांटिटी. सपोज इन थांदा w वेक्टर मॉडुलस ऑफ w वेक्टर इज इक्वल टू कोन w. मींस डायरेक्शन पार्ट टा कटि गला, ओनली रहला को पार्ट टा मैग्नीट्यूड पार्ट टा. दैट इज मैग्नीट्यूड पार्ट. ए w टा काहाकू इंडिकेट करबो, वेक्टर क्वांटिटी ना स्केलर क्वांटिटी. मॉडुलस नहीं जे माने सेटा कोन हिजो गोटे स्केलर क्वांटिटी. मन रखिता, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी. मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर रो मॉडुलस टा कोन हिजो गोटे स्केलर क्वांटिटी हिजो. डायरेक्शन पार्ट टा कटि जिवो, ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट टा रहइबो. बुझिला त? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओनली को पार्ट टा कटि जिवो, डायरेक्शन पार्ट टा कटि जिवो, ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट टा रहइबो. मैग्नीट्यूड पार्ट टा रहले एटा को क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी. दैट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू केते हला a. दैट इज ए मैग्नीट्यूड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ओके, तापर को हेडिंग दियो यूनिट वेक्टर. हेडिंग दियो यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर कोन? सपोज आमे कोन पढिले, गोटे वेक्टर कहले माने तार गोटे मैग्नीट्यूड रहउची, गोटे डायरेक्शन रहउची. सपोज मु कहले ए वेक्टर टा लेली ना, ए वेक्टर सपोज एटा गोटे ए वेक्टर आर गोटे मैग्नीट्यूड अछि, डायरेक्शन को बड ए बड अछि हला. तणो वेक्टर कहले माने तो माइंड रे आसिया दरकार द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव डायरेक्शन as well as magnitude. गोटे डायरेक्शन थिबो आ गोटे मैग्नीट्यूड थिबो. वेक्टर सदा में दीटा रहइबो, डायरेक्शन रहइबो, मैग्नीट्यूड रहइबो. बुझि पाइलो त? यूनिट वेक्टर कहले कोन? यूनिट वेक्टर मींस सारा मैग्नीट्यूड केते आसीबो, 1 ही आसथिबो. बुझि पाइलो त? यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1. ऑब्वियसली ना यूनिट लिखसन 1 तो तने यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड सदा में केते आसीबो, 1 आसीबो. आता डायरेक्शन कथा देखिबा को पटे लेखो. A unit vector is a vector. A unit vector is a vector having unit magnitude, having unit magnitude drawn 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 in the direction of
drawn in the direction of given vector. Given vector. Given vector. ओके आमे कोन करिया आर मैग्नीट्यूड होची केते 1 डायरेक्शन कोन होची सपोज a गोटे यूनिट वेक्टर नबा a गोटे यूनिट वेक्टर नबा यूनिट वेक्टर से a यूनिट वेक्टर रो डायरेक्शन ता कोठा ना a वेक्टर रो डायरेक्शन नबा देखिबा तळे डिस्कशन कर तुम जानि परिबो मैथमेटिकली इट इज फाउंड बाय अब केमते फाउंड करिबा मैथमेटिकली it is found by dividing given vector by its given vector the mathematically it is found by dividing given vector by its modulus of that vector. Okay, बुझियला तो mathematically it is found by dividing the given vector by its modulus of that vector. देखिबा सपोज यूनिट वेक्टर that is यूनिट वेक्टर ने a cap is equal to केतला a vector divided by mathematically it is found by divided given vector a vector suppose a vector that is a vector modulus that is unit vector that is केतला a vector by a मतलब ठीक that is scalar तबे यूनिट वेक्टर रो डायरेक्शन को पठेला a वेक्टर जो गिवन नै छै सो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को पठेला ना a वेक्टर डायरेक्शन जो पठे बुझि पयला त आ मैग्नीट्यूड केते आसबो 1 आसबो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड केते आसबो 1 यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड आसबो 1 आ डायरेक्शन ता को पठे आसीबो ना जो a टा में नै जो गिवन वेक्टर जो नै छै दैट इज a वेक्टर डायरेक्शन जो पठे a कैप रो डायरेक्शन से पट a कैप का हम कोन कोनती दैट इज आकु कोन कोनती दैट इज a ऊपर जोटा टोपी उठो छै हला आकु कॉल्ड a कैप दैट इज a कैप बुझि पयलो कोन कोनती a कैप यूनिट वेक्टर कोन कोनती a कैप इज इक्वल टू a वेक्टर बाय a वेक्टर रो मैग्नीट्यूड बुझि पयलो तो सपोज मु नेली b वेक्टर नेली सपोज गोटे मु गिवन वेक्टर नेली b वेक्टर नेली हला तबे यूनिट वेक्टर केता हो b क्या केता हो b वेक्टर बाय b वेक्टर रो मैग्नीट्यूड ओके सपोज मोडे नेली एग्जांपल नेली d वेक्टर गिवन वेक्टर d कैप केता हो d कैप इज इक्वल टू d वेक्टर बाय d वेक्टर रो मैग्नीट्यूड दैट इज d वेक्टर बाय t बुझि पाइलो तो सेम नेली suppose w cap नेली केते w cap means w vector by w vector रो magnitude that is w vector by w बुझि पाइला तो यूनिट वेक्टर कहले कोन मैथमेटिकली गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय जो वेक्टर ता डिवाइड तार मैग्नीट्यूड पार्ट बा तार मॉडुलस नै जो बुझि पाइला तो गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय गिवन वेक्टर रो मॉडुलस दैट इज यूनिट वेक्टर मैथमेटिकली आ डायरेक्शन कोन होची ना डायरेक्शन आर सदा आर मैग्नीट्यूड केते आसीबो 1 आसीबो 1 मैग्नीट्यूड आसीबो आ डायरेक्शन ता को ना गिवन वेक्टर रो डायरेक्शन जो पटे हिथिबो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ठीक से पटे हो गिवन वेक्टर रो डायरेक्शन जो दैट इज a कैप इज इक्वल टू दैट इज यूनिट वेक्टर a कैप इज इक्वल टू केतला a वेक्टर बाय a तो a आर डायरेक्शन जो पटे गिवन वेक्टर रो डायरेक्शन जो पटे हिथिबो a कैप रो डायरेक्शन ठीक से पटे हो बुझि पाइला तो दिस implies ऊपर ଗୋଟେ छोटो कोन लिखिबा this implies a vector can be
can be written as a vector टाको हम केते लिखि परिबा this implies a vector is equal to केता हो एटा पुनेस a क्या a vector is equal to केता हम लिखि परिबा a vector is equal to a क्या a is equal to magnitude a क्या टा कोन होछि त डायरेक्शन ओनली डायरेक्शन पार्ट देखो a हमर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड केते 1 तो आउ ओनली डायरेक्शन ता देखिबो यूनिट वेक्टर सदा पे मन रखिता कोन देखिबो ओनली डायरेक्शन कारण मैग्नीट्यूड ता तार 1 मैग्नीट्यूड 1 ता जदि a रे गुणी देबो a ही आसीबो ना a क्या पर कोन रहला हमर a क्या गोटे यूनिट वेक्टर में कोन जानले मैग्नीट्यूड होची 1 हैला ओनली कोन रखिबो डायरेक्शन पार्ट ता देखिबो यूनिट वेक्टर गिव्स ओनली द डायरेक्शन पार्ट मैग्नीट्यूड इज 1 तने एठु मु लिखली a कैप is equal to a vector is equal to a cap a vector is equal to a cap means कोन हला कोन that is the magnitude part a cap टा कोन छै हमर डायरेक्शन पार्ट कारण a cap रो मैग्नीट्यूड होची 1 रे a जदि गुणी देबो केते हेतु से a ही रहइबो that is a vector is equal to a cap हे गला वेक्टर अछि वेक्टर रहला माने मैग्नीट्यूड रहला डायरेक्शन रहला that is a vector असला माने मैग्नीट्यूड आसीबो डायरेक्शन आसीबो आ मन रखिता यूनिट वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते 1 आ एटा ओनली कोन देखिबो डायरेक्शन को पटे डायरेक्शन देखिबो ना गिवन वेक्टर रो डायरेक्शन जो पटे बुझि पाइलो तो बहुत इंपोर्टेंट इनस यूनिट वेक्टर ठीक अछि नेक्स्ट हमें पढिबा पैरेलल वेक्टर कोन नेक्स्ट हेडिंग दियो पैरेलल वेक्टर डेफिनेशन को देखिए पैरेलल वेक्टर the vectors are said to be the vector are said to be parallel vector are said to be parallel vector if they are arced along same direction and angle between them and 0 degree okay देखिबा केनजा वेक्टर है सपोज a वेक्टर लियो आउ b वेक्टर लियो a वेक्टर और b वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट करछंती आंको भीतर एंगल केते 0 डिग्री सो a and b is called as parallel vector बुझि पाइल तो सेम डायरेक्शन में एक्ट करथियो आंको भीतर एंगल केते थियो 0 डिग्री सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज parallel vector then anti parallel vector ताबे देखियो कोन anti parallel vector कहउंदी anti parallel vector 6 anti parallel vector okay the vectors are said to be anti-parallel vector if they are act in opposite direction and angle between them
and angle between them is 180 degree. ओके देखिबा से माने वेक्टर नबा a और b वेक्टर नबा ओके से माने कोन हेथिबे एक्ट करथिबे ऑपोजिट डायरेक्शन रे सपोज गोटे वेक्टर जदी एपट सब a डायरेक्शन दा हम नोच कोन ईस्ट जदी गोटे ईस्ट रे जदी एक्ट करथिबे a वेक्टर देन b वेक्टर दर ऑपोजिट रे वेस्ट रे एक्ट करथिबे दैट इज b वेक्टर वेक्टर विथ एंगल केते डायरेक्शन को देखो गोटे ईस्ट आ गोटे वेस्ट गोटे ईस्ट को एक्ट करछि गोटे वेस्ट को एक्ट करछि एंगल केते हो 180 डिग्री बुझि पाइलो तो तेरो दैट इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन एक्ट करिवे एंगल केते होथिबो 180 डिग्री बुझिला तो देन 7 रे पढिबा कोलिनियर वेक्टर 7 रे कोलिनियर वेक्टर 7 कोलिनियर वेक्टर okay collinear vector the vectors which are arcs along a same line is called collinear vector बुझि पाइलो तो गोटे लाइन रे हैला सपोज एग्जांपल न देखिबा सपोज a b आउट वेक्टर में c गोटे लाइन रे तीनटा वेक्टर एक्ट करछन a वेक्टर b वेक्टर and c वेक्टर this a vector b vector and c vector is called as collinear vector same line गोटे लाइन रे माने एक्ट करछन्ती then a vector b vector c vector is called as collinear vector the vector which are arcs along a same line is called as collinear vector बुझि भेल here a b c is called as collinear vector then coplanar vector 8 रे नालो पढिबा कोडा coplanar vector 8 coplanar vector 8 coplanar vector coplanar vector okay coplanar vector the vectors which are arcs in a same plane is called coplanar vector okay suppose गोटे प्लेन नेली suppose गोटे प्लेन गोटे सरफेस नेली गोटे प्लेन नेली हैला suppose गोटे प्लेन नेली गोटे हैला गोटे प्लेन नेली मु suppose a b c एटा a वेक्टर बड़ कि नो एटा कोप्लानर गोटे सेम प्लेन रे हैला गोटे प्लेन रे नियम को एटा गोटे प्लेन रे ए प्लेन रे वेक्टर एक्ट कर गोटे प्लेन रे हैला suppose गोटे प्लेन मु नोची एटा प्लेन नेली suppose a m कैट कला b m कैट कला c a एटा b एटा होची c वेक्टर गोटे प्लेन रे सेम प्लेन रे तीनटा वेक्टर अछंती देन a b c वेक्टर इज कॉल्ड एज कोप्लानर गोटे प्लेन ऊपरे माने एक्ट करियो सपोज एटा प्लेन नेली हैला एटा प्लेन रे आर ऊपरे तीनटा वेक्टर मन ऊपर एक्ट करले a b c देन
This three vector is called as coplanar vector. Coplanar pore co-initial vector. 9 रे co-initial vector. 9 co-initial vector. Co-initial vector. Co-initial vector. Co-initial vector. Co-initial. The vectors co-initial vector कहले कौन देखो the vectors which have same initial point is called co-initial vector. Co-initial vector. Okay, so the vectors which have same initial point is called as co-initial vector. Suppose initial point सब vector समान थिबो, suppose कोइ करबी that is A, that is B, that is C, हला that is D, हला that is A vector, एटा हला B vector, एटा हला C vector, एटा हला D vector, हला ए जो जते A B C D जो चारटा वेक्टर अछि ताकर इनिशियल पॉइंट सेम ना, that is O A B C D चारटा वेक्टर अछि समान के इनिशियल पॉइंट कोटा अछि O, बुझि पाइलो तो माने स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल सेम इनिशियल पॉइंट. This A B C D vector is called as co-initial vector. बुझि पाइलो तो A B C D is called as co-initial, that is the four vector has same initial point, good initial point होछि, that is O, common point. So this four vector is called as co-initial vector. Okay, then heading here polar vector and देखिबा दुटा वेक्टर अछि, polar vector and axial vector. Polar vector कोन? Polar vector and axial vector. बहुत important. First discussion करिबा polar vector कोन. Okay, देखो polar vector heading दियो polar vector. The vector which have starting point is called polar vector. Okay, हमें कौन the vector which have starting point is called polar vector. देखो example कौन दिबो ना displacement, force, velocity. Okay, starting point जो वेक्टर रो गोटे स्टार्टिंग पॉइंट अछि, सपोज ताको हम कोन कहै पोलर वेक्टर को स्टार्टिंग पॉइंट माने स्टार्टिंग पॉइंट
जो वेक्टर फोर्स रोटे डिस्प्लेसमेंट रोटे स्टार्टिंग पॉइंट फोर्स रोटे स्टार्टिंग पॉइंट वेलोसिटी रोटे स्टार्टिंग पॉइंट बुझि पाइले तो सपोज हम जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जेटा पढिथिले देखो गोटे कोऑर्डिनेट एक्सिस रे नउथिले हला एटा पोजीशन वेक्टर थिला गोटे एग्जांपल दे दू हम एटा करिचे pq ए जो डायरेक्शन रा नउथिला हला दैट इज p दैट इज q तार गोटे स्टार्टिंग पॉइंट अछि p रु गोटे बॉडीटा स्टार्ट करी गिरी q रे आसी रहउथिला p रु गोटे बॉडी स्टार्ट होउथिला से जे कोड रहला q रे रहला so our starting point is so displacement is a polar vector जो vector रोटे starting point अछि this vector is called as polar vector the vector which have a starting point is called as polar vector हम already discussion करछे कोठी displacement vector पढाला बडे से displacement सेम displacement force और velocity एमान को सो कोन अछि गोटे starting point अछि गोटे point रे मन start होछन so this vector is called as polar vector मन रखिता हैला ताउ का से पडिया axial vector heading here axial vector axial vector axial axial vector को एटा सब बहुत इंपोर्टेंट से मन रखिबो the vector represent the vector represent rotational the vector represent rotational effect of a object and it act along the axis of rotation is called axial vector ध्यान से सुनो axial vector is called axial vector example कौन कौन से एग्जांपल আছে देखो एग्जांपल angular velocity रा कोडा हवा गुसु सर्कुलर मोशन रे angular velocity angular momentum torque ओके एवडा समझा कोन होजी हमर होजी कोन axial vector बुझियला तो ओके axial vector टा कोन से कोन कहला this vector represent the rotational effect of a body ये कहा को रिप्रेजेंट करछि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए बॉडी गोटा बॉडी जो रोटेशन करछि सेटा को रिप्रेजेंटेशन करछि आ वेक्टर टा एक्ट कोड करछि द वेक्टर एक्ट्स along the axis of rotation बुझि पाइला तो ये कोड एक्ट करछि axis of rotation सपोज देखो गोटे बॉडी टा मूव कर सर्कुलर पाथ रे ओके एटा को केमति बुला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बुलुछि केमति बुला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बुलुछि तबे एम दिन बुला तबे एक्सिस ऑफ रोटेशन कोटा हो एटा दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एटा एक्सिस ऑफ रोटेशन बुझि पाइला तो एटा केमति बुला एंटी क्लॉकवाइज रे एक्सिस ऑफ रोटेशन कोन को एक्सिस चारि पटे बुलुछि सपोज ए चकटा देखो हैला आ चारि पट जिंसटा दे बुला चक चारि पटे ए मझिरे जो चकटा रहउछि सेटा जे कोन चारो एक्सिस ऑफ रोटेशन बुझिला तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बुझि पाइला एक्सिस ऑफ रोटेशन एटा जे कोन होछि ओटा बॉडी पे मूव करछि तबे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम ओटा केमति को डायरेक्शन रे एक्ट करिवो को डायरेक्शन रे ना एक्सिस ऑफ रोटेशन डायरेक्शन रे एक्ट करिवो बुझि पाइला तो एटा केमिति जानिबो ना यूजिंग राइट हैंड थंब रूल को रूल पकेबो राइट हैंड थंब रूल रे पकेबो बुझि पाइला तो केमति एटा तो ऑलरेडी आगु पढा हबो केमति राइट हैंड थंब रूल सपोज ए बॉडी मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हैला तमरो एटा होची
तमरा जो ए जो फिंगर जो अछि फर्स्ट चारटा फिंगर को तमे बॉडी रोटेशन एमती अछि तमरो बॉडी रोटेशन आड नियो हला रोटेशन करछि आ एक्सटेंडेड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डायरेक्शन मोशन की रो दबो बुझि पाइला तो एठी कोन होछि जदी बॉडीटा हमरो केते बुला एंटी क्लॉकवाइज तबे एक्सिस ऑफ रोटेशन दा स्ट्रेस थंब मुझे सीधा तबे एगुडा डायरेक्शन हो एगुडा डायरेक्शन एक्ट करिवो एक्सियल वेक्टर ता बुझि पाइला तो बुझिला तो आकु कोन करछि हमरो एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन राइट हैंड थंब रूल जे पढाबे एटा तुम भल से जानि परबो हला एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन को बटा ए बटा एटा होछि डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर एक्सियल डायरेक्शन फुट गेला सपोज ओटा बॉडीटा क्लॉकवाइज रे बुला क्लॉकवाइज डायरेक्शन बुला को डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलले दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एटा तबे एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन को तोड़ को बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल एटा कोन एक्सिस ऑफ रोटेशन एटा कोन एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन ए बोले एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन को तोड़ को बुझि पाइला तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टाटा एटा गोटे एंटी क्लॉकवाइज और उल्टा क्लॉकवाइज वर्तमान एमती बुलछि तो के तुम हाथ को देखो एमती बुलला ए चारटा अंगुल देखो रोटेशन एटा बॉडीटा रोटेशन क्लॉकवाइज एक्सटेंडेड थंब एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन ओके एठी गेसो मोर चारटा अछि क्लॉकवाइज डायरेक्शन एमती बुलला क्लॉकवाइज डायरेक्शन एमती बुलला एक्सटेंडेड थंब मोर एक्सटेंडेड थंब ता कोन होछि एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन बुझि पाइला तो दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन बुलला इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बुलछि तनो एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन ता पाइबे बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल बुझिला एटा एक्सियल वेक्टर ता कोन कहछि ना रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द बॉडी गोटे बॉडी रो रोटेशनल इफेक्ट देखु हम तार कोन कैलकुलेशन एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम टॉर्क एटा आगु सु पढा बुझि पाइला तो एक्सियल वेक्टर गिव्स द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए बॉडी how the axial vector acts along the axis of rotation ये कोन करिवो एक्ट करिवो डायरेक्शन ता तुम केमति पाइबो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल ओके बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल निज खाता रे तुम राइट हैंड थंब रूल पकेबो देखिबो एटा रोटेशन ता कोडा नबो बॉडी रे रोटेशन ता कोडा नबो तमरे चारटा फिंगर एक्सटेंडेड थंब ता एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन मन रखिता चारिटा ए चारटा होची रोटेशन रो डायरेक्शन एक्सटेंडेड थंब रो डायरेक्शन होची कोन एक्सियल वेक्टर देखो एटी केते बुला ए पटे बुला दैट इज एंड बुलची तो बॉडीटा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज एक्सटेंडेड थंब करो एक्सियल वेक्टर एट देखो क्लॉकवाइज रे बुला चारटा फिंगर में आसे खाता रे तुम यूज करिवो एंड बुलची तो एंड बुला दैट इज क्लॉकवाइज एंड बुला एक्सटेंडेड थंब विल बी गिव्स द एक्सियल वेक्टर डायरेक्शन बुझि पाइलो नेक्स्ट हेडिंग दियो जीरो वेक्टर नेक्स्ट हेडिंग दियो जीरो वेक्टर बाको कोन कहंती नल वेक्टर द जीरो वेक्टर or null vector is a vector which have magnitude केते हो which have zero magnitude and an arbitrary direction okay and arbitrary direction बुझियला जते बेले पढा होची क्लास रे तमे बुक गोटे बुक पाखे रखियो आइदर एसएलआर रा हो केपी हो सब जा बुक पाखे रखियो बुझि पाले एटा आउरी भल से बुझियो देखो जीरो वेक्टर होची कोन ना दैट इज वेक्टर इज ए
जीरो वेक्टर इज ए गोटे वेक्टर होची तार मैग्नीट्यूड केते होची 0 आर्बिट्ररी जे कोनसी डायरेक्शन नै पारे बुझि पाइले त ताको हम कोन कहूची जीरो वेक्टर बा नल वेक्टर सपोज मु गोटे एग्जांपल नेबी सपोज गोटे एग्जांपल होची इफ a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर जदि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर हुए then a minus b कोन हो a minus b that is वेक्टर को दीटा को एटा कोन वेक्टर आसीबो ना स्केलर आसीबो आंसर ओटा वेक्टर ही आसीबो को वेक्टर आसीबो जीरो वेक्टर बुझि पाइलो तो दैट इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर ओके बुझिला तो a if a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर देन a minus b कोन हो गोटे जीरो वेक्टर सपोज आ गोटे कोन नबा सपोज velocity of a stationary object velocity vector of a stationary object stationary means स्थिर गोटे स्थिर वस्तुर velocity vector टा केते velocity जे वेक्टर क्वांटिटी केते हो 0 तार velocity किछ नै मींस 0 वेक्टर velocity of a velocity itself a vector quantity velocity of a stationary object laying on the road that is 0 vector velocity केते हो 0 vector गोटे stationary object रो velocity vector टा केते 0 vector बुझि पाइलो तो ओके देन पढिबा property of 0 vector कौन सो प्रॉपर्टी अछि प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वेक्टर if a vector is r to zero vector कौन दबो फर्स्ट gives a vector दबो बुझि पाइलो तो सेकंड if lambda is equal to lambda गोटे रियल नंबर नियो यदि मल्टीप्लाई कर दो जीरो वेक्टर से तो तबे आंसर केते आसीबो जीरो वेक्टर here lambda is a real number जे कोन से रियल नंबर नियो ताकू जीरो वेक्टर रे मल्टीप्लाई कर दे आंसर केते आसीबो जीरो वेक्टर बुझि पाइलो तो थर्ड रे इफ 0 इज मल्टीप्लाई विथ a वेक्टर गोटे जीरो टाकू नेकिरी a वेक्टर जदी मल्टीप्लाई कर दो तबे आंसर केते आसीबो जीरो वेक्टर केते आसीबो जीरो वेक्टर बुझि पाइलो तो गोटे a गोटे जीरो टाकू नेकिरी गोटे वेक्टर रे मल्टीप्लाई कर दियो आंसर केते आसीबो जीरो वेक्टर आसीबो दैट इज द प्रॉपर्टी बुझि पाइलो तो एतियो मन रखिबो देन नेक्स्ट क्लास रे हम कोन पढिबा वेक्टर एडिशन कहले कोन अता यूजेस कोन काहे के हम वेक्टर एडिशन का तमे स्केलर एडिशन ऑलरेडी पढिछ 2 रे 3 मिसले 5 10 रे 5 मिसले 15 दैट इज स्केलर एडिशन किंतु वेक्टर को एडिशन डायरेक्ट करि परिबो ता मैग्नीट्यूड बाहर करि परिबो डायरेक्ट वी फॉलो सम रूल्स दिस रूल्स इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन तीनटा रूल अछि triangle law of vector addition parallelogram law of vector addition polygon law of vector addition next class में discussion करिबा ओके